in other media, and people were discussing, and there was a very little knowledge about the subject and how to do. We thought then we should then take it up as a part of academia, or aftershocks and opportunities. Aftershocks मतलब ठीक है, एक चीज हो गई, उसके aftershocks होंगे, लेकिन aftershocks का मतलब ये नहीं है कि it's a doomsday. Aftershocks का मतलब है कि now what's next? Opportunities तो है, human being has survived all these years even with low tech things. So then we thought to kill a lot of myths, to act as a myth busting forum. हमने ये theme उठाई, और इस theme के ऊपर we are running different panels. पहले हमारा दूसरे टॉपिक पे था, आज हमारा है पहले हमारा IT फोकस ज़्यादा था because that's a new emerging thing, तो उसके ऊपर हमने पैनल क्रिएट किया था. आज हमने थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के ऊपर किया है, and that's why we have invited the top hosts or guests, to talk about their experiences, and policy makers भी हैं, practitioners भी हैं, and people who have pivoted away from their main business model to the others, वो भी हैं. So we like to listen and share the thoughts of the students. बहुत सारे भी हमारे पास Zoom पे आ जाते हैं, बाकी social media पे होते हैं, because it's going live on Facebook and also on YouTube and also in and other areas. तो फिर वो इसका सिलसिला है. तो right now थोड़ा सा मैं एजेंडा भी ब्रीफ कर देता हूँ कि इसके ऊपर ही सारी बातें होंगी. तो अच्छा, अब ये इनिशिएटिव हमारा यूएमटी में हमने इनोवेशन कैपिटल डेवलपमेंट फोरम, एक थिंक टैंक क्रिएट किया था 2016 में, और 17 से हमने उसकी एक्टिविटी शुरू कर दी थी बड़ी एग्रेसिवली. उस पे थॉट वाज कि उस जमाने में कोविड का तो कुछ नहीं पता था किसी को, लेकिन ये जरूर था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स थी, बाकी भी थी, कि थिंग्स आर गोइंग टू रीशेप. 75% of companies will not be there जो आज यहाँ पे हैं. 2 billion jobs will be gone, and then there will be billion new jobs coming up. लेकिन किसी के पास आंसर नहीं था कि वो नई जॉब्स होंगी क्या. तो we started in depth exploration exercise. हमने उसमें diagnostics lab किए, industry, academia, government, तीनों को बिठा के, and multiple sessions run किए to get to some conclusion, to get some thoughts from them. And the core idea was to drive Pakistan from product driven or factor driven to innovation driven idea economy, because that's where the money is. A factor of production हमने देखा, इंग्लैंड ने भी हटा दिए, अमेरिका ने चाइना शिफ्ट कर दिया. China became the factory of the world and the rest of the world was the consumer. उसके बाद हमने देखा कि China became from factory of the world to become the biggest consumer of the world also. एक वक्त था अमेरिका में about 250 million Americans were financing, data कहता है कि 75% of global GDP, meaning whatever was produced anywhere in the world, it was being consumed by Americans. 10% of world fuel was consumed by American cars, but now we are seeing all the disruptions. तो उन चीज़ों को लेके हम आगे चले और हमने कहा कि हमने let's explore it more, और हम अपनी क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस को यूएमटी में एनहांस करें, और फिर जो आउटकम है उसको शेयर भी करें बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ. And we have been approaching a lot of people for that. So before we formally start on this, एक 15 सेकेंड की हम खामोशी करेंगे, and in respect and pay tribute to all the doctors and frontline fighters जो कि COVID-19 के against fight कर रहे हैं. They're exposing themselves to the extreme scenarios, and their families are supporting them worldwide. So just 15 seconds, we'll be in the silence. Okay, thank you. These guys are doing a fabulous job. They're trying to save humanity. So full respect to them and hats off to them. And we pray that they stay healthy and keep on helping us survive in this difficult time. Okay, now I'll request Maria to run the ICDF logo animation.
This is a logo where we were giving our thoughts since 2016. Mari, can you run it, please? For the champion. So this was a forum where we were trying to focus on what to do and how to put 5G workforce, 5 different generations are there in any organization now, to make them work together and to drive something of consequence which can benefit humanity overall. So moving on. So it's aftershocks and opportunities post-COVID-19 for emerging careers and entrepreneurial ecosystem, creating कहते हैं कि न्यू नॉर्मल में हम जाने वाले हैं and new normal is gonna be very different than what we are seeing live today. उसके लिए because entrepreneurial ecosystem को हमने explore करना था because we see the future for the students and even for anybody, you know, to survive they should have some entrepreneurial edge. It could be high tech, low tech, skill based or anything. तो उसलिए हमने कहा कि आज this session is sequential to the first session which we had about the IT and its introduce the panelists because I think 41 participants यहाँ पे आ गए हैं Facebook पे भी a lot of activities going on. So I would like to introduce Mr. Hamad Khalik. He is project head for Plan 9, which is an incubator run by Government of Punjab. Mashallah, he is a live wire and aggressive force pushing a lot of things to do. He's a senior program manager and he has worked in different industries in sales and business development and is an excellent way to overcome economic issues, which is the issue of today. So having worked with both national and international markets for more than 10 years and he has directly worked with 80 plus new startups and he has tremendous knowledge and expertise in, you know, from ideation all the way to implementation, execution, and monetization. So we are very happy and lucky to have him with us. Welcome. She is founder and CEO of Laughter Movement. She's psychologist by profession and laughter therapist. She is member of International Council of Professional Therapists, London, UK. She's certified in the science of well-being from Yale University, USA. As a laughter therapist, Yasmin works with some of the most renowned tech companies around the world, helping the individual suffering from burnout to regain their highest level of performance. So she is a performance driver. Ashoka, Nestle, British Petroleum, US military, so on and so forth. The list goes on. So welcome, Yasmin, and we are very happy and excited to have you with us. I would like to learn more from you. Then we have Mr. Furkan Rathore. He's CEO Book to Wheel and Book for Wheel. He started Book to Wheel in 2015 and won the Danish Entrepreneur Award in 2016. He was in Denmark. Today, book2wheel.com is expected or sprawling over 72 cities. The scholarship during the education in Denmark. So he is also a thoroughbred professional in this field and he has seen it all. And we like to have his views and thoughts going forward. So, Hamad, I would like to start with you. With my, actually, just a small thing.
There will be 3 rounds of questions. After every round, we'll run a small survey, और उसी वक्त उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे. वो सर्वे के जो क्वेश्चंस हम फ्लैश करेंगे सबके पास, और हम इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स फ्लैश कर देंगे ताकि हम देखें ट्रेंड लाइन किधर जा रही है. कीपिंग इन व्यू आवर टॉक्स, and it will also help us in understanding the involvement level also. So Hamad, let's start with you. So being a experienced practitioner, how do you think that this pandemic has impacted the entrepreneurial ecosystem, and in your opinion, how it has impacted incubators? So Hamad, your Bismillahirrahmanirrahim. thoughts. There. Thank you, Khalid Saab and Please go Saira ahead. for hosting me and for such an introduction. Coming back to the question that you asked me, I would like to start off और तीनों फेज के मैंने क्वेश्चन से गो थ्रू कर चुका हूँ. सो एक चीज कॉमन रहेगी जो मैं सबको बताऊंगा कि पुरानी सेइंग है कि जो परेशानी है वो हालात से नहीं ख्यालात से होती है. That's very important to understand this. And as things are changing, और आपने बड़ा rightly point out किया कि बड़े से लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं और बहुत डिफरेंट बातें करना शुरू कर, उन्हें व्यूज देना शुरू कर देते हैं. Things are quite a few things have been unfold, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त के साथ अनफोल्ड होंगी. वैक्सीन आती है या नहीं आती, लाइफ बैक टू नॉर्मल होती है या नहीं होती, न्यू नॉर्मल क्या होगा, people are still adjusting themselves according to the situation जो कि अभी आ रही है. So it's before time that you say कि अच्छा जी हमने adjust कर लिया है, कुछ कर लिया. Now coming to the exact question that you asked me, which is related to entrepreneurship and incubation, uh, primarily what we have observed, हमारा cycle चल रहा था plan 9 का, जिसके अंदर companies who were incubated, some of them were already making money, some of them were in product को reiterate के phases के अंदर थे, so product development improvise कर रहे थे. वो काफियों के काम, प्राइमरीली जिनका तो सेल से काम था, वो काफियों का काम रुक गया क्योंकि जब सब कुछ हॉल्ट किया, लॉकडाउन हुआ, तो हमने ये देखा कि so which means cash flow issues. First issue that you have to resolve is cash flow, and no business can survive without a cash flow का survival. So ये बहुत बड़ा मसला सामने आया. फिर हालात के पेश नजर कुछ लोग, फिर बहुत सारे बिजनेस ने पिवट किया. Looking into the current scenario, and when people got to know, पहले लोगों को लगा कि एक छोटी सी ब्रेक आई है, but when people started to know the fact that this can prolong, and to be able to sustain this tenure they'll have to do something, that's when we started seeing startups pivoting themselves. Gifting के startups ने e-commerce के अंदर shift करना शुरू कर दिया. import के start export के import के startup based startup ने सारा काम अपना लोकल डिलीवरीज पे ले आए, कंज्यूमर पैटर्न्स को देखना शुरू कर दिया. सो इस सारे वक्त के अंदर हमने इस तरह से स्टार्टअप्स को इवॉल्व होते देखा है. अब जहां तक बात रही इंक्यूबेटर और इंक्यूबेशन प्रोसेस की, सर वो इस तरह से बदलेगा कि पहले आपने देखा था कि वी हैड द अपॉर्चुनिटी, आज भी हम बैठे हुए हैं तो इट्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन. पहले यू वर मीटिंग पीपल, फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज्यादा था, इकट्ठे बैठना बहुत ज्यादा था. वो सब कुछ नहीं रहेगा अब. वो मुश्किलात, वो जो चेंजेस आएंगी और लोगों को अडेप्ट करना पड़ेगा. सो हमारे इंक्यूबेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम तो था, जो हमें एप्लीकेशन आती थी वो ऑनलाइन आती थी. उसके बाद एक फिजिकल प्रोसेस चलता था, स्टार्टअप्स आते थे, पिच करते थे, pitching sessions होते थे, your pitching mattered, question answers, you had to be confident to be in front of people in pitching. वो सब बदल जाएगा. दूसरी जो अच्छी बातें, वो सब बदलेगा और सब कुछ ऑनलाइन चला जाएगा. जो अच्छी बातें इसमें से निकल रही हैं, और आज हम ये डिस्कस कर रहे थे नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के अंदर held by NIC, we had incubation managers की एक आज टॉक थी, उसमें ये डिस्कशन हो रही थी कि the good thing about students and entrepreneurs is a lot of content अब डेवलप हो रहा है इस तरह की टॉक्स की सूरत में, डिस्कशंस की सूरत में, एंड इवन ट्रेनिंग सेशंस की सूरत में, और वो आर्काइव होता जा रहा है. तो स्टूडेंट्स who want, people who want to learn, it's high time that you have access to a lot of data. पहले हमारे पास इतना डेटा नहीं है जी, करिकुलम जी बाहर का है, तो इससे बहुत सारा लोकल कंटेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, एंड आई थिंक व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल पीपल अराउंड हियर. सो एक कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन चला जाएगा, एंड ये सारा इंक्यूबेशन प्रोसेस जो है प्रॉब्ली कुछ अर्से तक तो ऑनलाइन रहेगा, बिकॉज फिजिकल आप अभी तक तो इकट्ठे नहीं हो सकते, और साथ के बड़े वो नहीं चल सकते. So, and similarly, start as entrepreneurs at a student level, my advice to you is you will have to think on different lines now. You'll have to think of resolving today's problems. कि अब life patterns, उसका बहुत आसान तरीका है कि आप consumer patterns देखें.
अब हमारी लाइफ किस तरह चेंज होंगी एज अ कंज्यूमर, हमें हमारे पैटर्न क्या क्या पैटर्न आ गए हैं उनके मुताबिक काम करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस आपके बदल गए हैं, जो हम आज से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले जो हम एक्सपेंसेस करते थे उनके पैटर्न्स बिल्कुल बदल चुके हैं। तो सो यू हैव टू वर्क ऑनलाइन टूवर्ड्स दैट। इंक्यूबेटर्स इस वक्त काम ये कर रहे हैं कि हमने किस तरह से एक अमेलगमेशन करनी है ऑफ ऑनलाइन इंक्यूबेशन, वर्चुअल इंक्यूबेशन, एंड साथ ही साथ कुछ फिजिकल कॉन्टैक्ट भी साथ रहे। उसका कोई अमेलगमेशन हम कुछ निकालना चाह रहे हैं, प्लस बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट आपको मिलेगा। एंड दिस विल आल्सो गिव टियर 2 के सिटीज और में रहने वाले एंटरप्रेन्योर्स को एक्सेस मिलेगा टू पीपल लाइक खालिद साहब, टू पीपल लाइक अदर इंक्यूबेशन नेटवर्क्स एंड अदर सपोर्ट पीपल। मेंटर्स विल बी अवेलेबल, क्योंकि अब बहुत से लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो उस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से एक्सेस टू पीपल इम्प्रोवाइज हो जाएगा। सो आई थिंक पीपल शुड मेक यूज ऑफ दैट। Excellent, Hamad. So is going to be a reality for some time, and we need to learn with it, and we need to learn how to interact with each other. अच्छा, एक जो फैक्टर जो अभी मैं मैकेंजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग है या सोशल डिस्टेंसिंग है और यू आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड मीडियम्स टू कनेक्ट विद द पीपल, उसमें जो गैप है ना व्हिच वी नीड टू फिल इज एम्पैथी गैप. You should have the ability, you need to be a, let me put it other way, act your talks out. एंड आपने एंगेज करने के लिए, एम्पैथी क्रिएट करने के लिए जो भी ऑडियंस है उनका भी बाय लेना है. एंड यू हैव टू बी वेरी, यू नो, यू शुड एक्सेप्ट देयर आइडियाज एंड थॉट्स एंड मूव अलोंग विद देम. और एम्पैथी का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बड़ी जरूरत है. जो इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग में जो डिजिटल मीडिया यूज हो रहा है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग वेरी मैकेनिकल एंड वेरी मेथोडिकल. So this is what we'll keep them informal, friendly talks, discussions, stress free, ताकि सब खुल के जो भी उनके माइंड में बात करें. तो excellent. So now this is the way forward, and आगे ज्यादा हम यही देख रहे हैं कि you are right, lifestyle changes आ गए हैं, and people का जो shopping list है, जो laundry list है, वो भी change होना शुरू हो गई है. लेकिन on the lighter note, the richest man today is selling toilet paper. Jeff Bezos, Amazon is all about toilet. It's normal for him also, right? Thank you, Hamad. So I come to Yasmin. So Yasmin, you have heard his thoughts, Hamad, and so how COVID impacted your business? Because you were in business of high contact, meeting with the people, interacting, socializing, and then you had to migrate from your conventional practices to some other practices. So I would like you to give us your thoughts on level of anxiety has impacted the general mental health of general public. जैसे हमाद ने कहा कि ख्यालात की परेशानी है, बाकी इतनी नहीं है. तो what are the remedies in your view? तो थोड़ा अपना experience आप बता दो, how you pivoted away from your conventional और क्या करना पड़ा आपको, what challenges you faced. Right. So everybody who's listening, I'm a psychologist and a laughter therapist. I hope I'm unmuted now because it's my turn. Yes, I'm unmuted. I just checked. Khalid साहब ने बताया कि my business require me to be in high contact with people. मैं organizations के लिए and communities के लिए laughter therapies करती हूँ. So I remember कि last year when I was offered a funding to make my laughter therapy digital, so I refused it straight away. And outrightly मैंने कह दिया कि नहीं, मैं तो digital होना ही नहीं चाहती हूँ, इसलिए because we inherently defy this idea of going digital because we believe कि human interaction अरेंजमेंट्स के, लाइक हमें वेन्यूज की जरूरत होती है, हमारी लाफ्टर थेरेपी होती है सिर्फ लोगों के साथ. वो वंस द कोविड हैपेंड एंड पता चला कि अब सब कुछ डिजिटल होगा, तो आई टुक वन मोमेंट एंड आई डिड नॉट थिंक कि मैं तब तक इंतजार करूंगी. जैसे लोग कह रहे थे कि अब जब दोबारा से चीजें नॉर्मल होंगी तो दोबारा से बिजनेस स्टार्ट होंगे, लेट्स जस्ट टेक दिस एज अ वेकेशन. पीपल स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, पीपल स्टार्टेड डूइंग एवरी single thing that did not include their work, right?
ले रहे हैं. So as a psychologist, I could have maybe taken courses on psychology. I could have read books. I could have done something else with my time. Like मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, oh, you're a great cook. Maybe you should create new recipes. अपना YouTube channel बना लो. And I said, no, I'm a laughter therapist, and this is exactly what I'm going to do. It does not matter कि हमारा platform change हुआ है. I'm just going to immediately pick up. So I started with one laughter therapy session online, and this is रिसर्च करनी है, कैसे लाफ्टर थेरेपी को ऑनलाइन करना है, क्या चीज सक्सेसफुल होगी. आई डिड नॉट स्पेंड एनी टाइम प्लानिंग इट. आई सेड कि मैं ट्रायल एंड एरर की अप्रोच से जाऊंगी. व्हाटएवर वर्क्स वर्क्स, दैट्स फाइन. इफ इट डजंट वर्क, आई ट्राई समथिंग एल्स. there's no logistical cost at my end. मुझे ऑनलाइन करने का कोई नुकसान भी नहीं है. So let's just start with a free session. तो मैंने अपने फेसबुक के ऊपर लगाया कि मैं एक फ्री सेशन कर रही हूँ लाफ्टर थेरेपी का, ऑनलाइन लाफ्टर थेरेपी का. एवरीबॉडी इज इनवाइटेड. एंड आई रिमेंबर कि पहले ऑफ किए हुए थे और सिर्फ 2 ने अपने कैमरास ऑन किए हुए थे. एंड इंक्लूडिंग मी, वी वर लाइक 7-8 people, right? And I did the session. I had absolutely no motivation to do another session, but I said कि मैं continuously 1 हफ्ता करूँगी, and then I'm going to analyze कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है. अच्छा, सेकंड सेशन जब हुआ तो there were like 2-3 more people. तो हम लोग कोई 6-7 और लोग थे. जो हमने थर्ड सेशन किया तो उसमें कोई 8-10 लोग थे. चौथा सेशन मुझे पेड मिल गया फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन. यास्मीन, we lost you. आपकी आवाज चली गई. आप अपना माइक अनम्यूट करें. आपने म्यूट कर दिया अपना माइक. The admin has to. Yeah. So I'm unmute now. अच्छा, so yes, the चौथा सेशन जो है मुझे पेड मिल गया. What I was doing is I was doing a lot of digital marketing. कि मेरे जो भी सेशन की फोटो होती थी मैं उसको Instagram पे भी डाल रही थी, Facebook पे डाल रही थी, लिंक में कर रहे थे. तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी सर्विसेज अभी भी अवेलेबल हैं कि नहीं. So I was doing the opposite of that. मैं हर चीज पब्लिक कर रही थी so that people can be able to see. And literally fourth session onwards, my paid session started happening. And now the best thing that happened was कि पिछले साल तक I had to go to and I traveled to different countries to take laughter therapies there. In the last 2.5 years, I've taken laughter therapy to about 10 countries. And this year I was going to take to 3 more countries. And last year I had the chance to work with US Army, Facebook. तो मैं ट्रैवलिंग भी मिस करूंगी. हाउ एम आई गोना गेट इन टच विद माय इंटरनेशनल क्लाइंट्स. नाउ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज क्योंकि मैं हर जगह पब्लिकली जो है वो डाल रही थी अपने थेरेपीज की फोटोज एंड वीडियोज एंड साथ में हैशटैग्स लगा रही थी. सो पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप stuff for what can they do for anxiety. So even internationally people started reaching out. So now I've done a few sessions in Morocco and Dubai, and next week I have a session in Kenya. Now the best thing that's happening is that I don't even have to travel. There no people. All I have to do is just share a Zoom link and we do it from there. And partners in Singapore, Morocco, Dubai, London and Africa, जो वहाँ से मेरे sessions जो है वो arrange कर रहे हैं. They are making an outreach for me in the community, and now it's expanding even more fast. And I'm getting more clients even locally and internationally because लोगों के पास और कुछ करने के लिए है नहीं. Most of the services जो कि in person हुआ करती थी उन्होंने अपना online version निकाला ही नहीं है, जिसकी वजह से I got the opportunity to सीईओ की कॉल आई एंड शी सेड कि हम हर साल रमजान में अफ्तारी करते होते थे, बट इस साल हम अफ्तारी नहीं कर सकते. वी वर लुकिंग फॉर अदर एक्टिविटीज, बट और कोई एक्टिविटी है ही नहीं तो वी माइट डू लाफ्टर थेरेपी, राइट? सो नॉट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज डिड गो ऑनलाइन. एंड अभी जैसे जिम्स वगैरह हैं, दे स्टार्टेड अ लिटिल बिट ऑफ वर्जन कि जी कुछ ऑनलाइन एक्सरसाइज करके दिखा देते हैं, बट दे नॉट सॉर्ट ऑफ कोविड अडॉप्टेड. जैसे हमारी जो लाफ्टर थेरेपी होती थी इन पर्सन, उसमें हमारा ह्यूमन कांटेक्ट बहुत होता था कि when I launched the online version of it, so I formed all the exercises which you could do easily sitting in front of the laptop screen or sitting in front of your cell phone, and you could just laugh from there. I created a new version of it. I did not depend on my previous versions. Excellent. You see, so you took the advantage of digital can give you big reach
and Yes. you can approach the globe by sitting in your home, comfort of your home, Yes. no overheads, no Yes. traveling expenses. You just go online and just work from anywhere. But you Yeah. did very good thing. You know, entrepreneurship is all about risk taking. You decided to take a chance in something new, and you worked on out of the box thinking. You went to the solution. You believed in yourself and you applied it, and it worked. So I Yes. think this is one of the very strong message for the students that, you know, believe in yourself. Don't be scared to take risks. Apply yourself. And this is the age of digitalization. We have to get digital. And जैसे हमाद ने भी कहा, and doing pretty well. Actually, Yasmin, so I come to Furqan now. So Furqan, coming to you, so how this pandemic has disrupted your business model, what challenges you face, and and tell us something about how you were promoting your business before and how you're promoting it now. What is your story? Because इस story से ही लोगों की learning ज़्यादा अच्छी होगी. So I like to hear from you. All right, Furqan. thank you so much. First thing, what happened during this pandemic? So, as you guys know, I met you before and I told you all about my story, but I'd like to share a quick story here a little bit so everybody know what's my business domain is and what's my background is. So book2wheel.com is an online portal for sharing motorbikes. So if you have a motorbike, you're not using it, you can rent out to other people. It is a similar concept like Airbnb. One city, we expanded to 72 cities and island. And that was the story. And that was going great. We had a huge sale in 2019. And then we were expecting a huge sale in 2020. But then the Corona thing happened, and you know our business model was all based on tourism. We have 56% local tourists and 44% of international tourists. It was like somebody pulled the carpet under feet, and you know we fall from sky to down on the ground. It also gave me a heart attack. I was in the hospital for 4 days and got my angiography, so I really need the laughter thing going on here as well. So so you know, being an entrepreneur, you take a lot of risk, you do a lot of gambling. You know, my business was going very good. I put a lot of motorbikes with a lot of people. Bought a lot of motorbikes myself and all over the cities as well. So the It was biggest hit happening in was Denmark, right? This is all Philippines. about We are Philippines. based in Denmark, where I am right now, and the operations are in the Philippines. So the worst thing happened in Philippines. The president, you know, gave a statement: if you go out, they will shoot you, and they started shooting people. So for us, was it's like you know the end of the day for us, and that was a hard. Everything in my startup, and then boom. Well, so after I think 30 days, I started to rethink what could what could be done. We had a lot of you know owners who had motorbikes, and they have a plenty of motorbikes. And then we asked them, "What about you have a motorbike and we start the delivery business? You know, we will connect you with the person who needed took some order online and he started to deliver, and then from one guy to second and to third. The good thing, we had a huge network. You know, we were already connected with us, and you know, as data collection, Facebook and all these things, we have all these people message us. They were on our newsletters and on our news board with Facebook thing. So all the 5 years data we have, we could actually just send them newsletter that look more. People actually started to respond it very well. And then we actually create a differentiation model between all the delivery service which was going on. For them,
they were online, and we didn't want to waste any other money and building time to make another portal. We said we'll go as natural with our customer support. We'll just take orders through messages. So there was no extra charge on the prices. We only charged the delivery fee. We took 350 peso, 250 goes to the delivery guy, and 100 peso goes to us. So we quickly managed to stable our fixed cost. You know, that was the first thing. The employees that we have, we could keep them on our payroll. And so that's how we quickly survive. As your question, how we did marketing before and what we did now. Before, we used to do Google AdWords, Facebook for our rentals. So now we did the same thing with Facebook. We stopped Google AdWords because it's not much really related at the moment. But through the Facebook, we did a lot of marketing again, and that's how we get back to our business again. Some of the other, as you guys mentioned, things, this is going to be now the new way of norms, in my opinion, because we are in tourism business. We don't know, 2 years, 3 years, maybe people will go back to Southeast Asia. We don't know. So we started to rethink. And another thing, earlier somebody put this question that should we share the ideas with other people? They might steal it. No, people cannot steal it. Things don't happen in one day. You know, if you ask me to develop a new software, it will take me 6 months to a year. I'm not going to build the new software. I'm going to just find the guy who already have built the software and maybe share the market with him. Like some guys I met in Pakistan who have built the application delivery service. I can, you know, franchise there to Philippines and maybe in Denmark and other part of the world. That would be the new norms. I would not say spend your time now building. Market will change day to day. We don't know. Don't waste your resources on that. Use other people's resources, make more partnership, and what other people have, use them to in the local market. That would be my first thing. Excellent, Furqan. I mean, you have really hit on the nail. And this is the age of collaboration. And competition has to evolve itself into co-opetition, whereby, for example, Apple is paying $150 to Samsung on every phone Apple is selling because they're using their screens. Competition, but Apple has its own brand value and own image and own price point. And so, but great to know that you evolved your business model into something new, pivoted away, and you rose again as a phoenix. You know, phoenix rises from his ashes. So right from hospital bed, you went to, you know, a different business model, and then, you know, regain your life. Excellent. This is a story which I think everybody should try to understand, that how not to fall prey to any of the problems. It's all about mindset, as Hamad very rightly said. We should have a strong mind, and we should have the ability to think out of the box and to find new solutions to the problems we are facing. Excellent. I think it's an excellent start of this session. Sarah, will you please run the survey? Our first session is over, so let's run the quick questionnaire and share the results with them. All right. Guys, you have this question in front of you. You have 1 minute to fill it. 1 minute में 3 सवाल हैं, इनको fill कर दो ताकि panelists को भी पता लगे what's happening, what's the mindset. You minds also how you are thinking, and they will be able to better respond to your concerns and thoughts and issues. World is changing, life is changing, and we really need to learn to live differently. And these two success stories are all about digital marketing and, you know, pivoting away from their conventional thought processes, taking new initiatives, new risks, and then emerge as winners. And Hamad is a great mentor in this field. So we'll be inviting him again to give talk to the students on, you know, how to pivot away, what to do, what challenges are there. So Sarah, the moment you have a reasonable number of replies, and 1 minute, just close the survey.
and just share the results, please. In the meantime, Yes, sir. I'm Hamad, sharing. yeah, sir, result is there. So just wait for a few seconds and I'll share. All right, okay. Because we need to draw trend lines also. What's going on in the mind of participants and the people who are listening. इसका हम secondary run Facebook पे भी करेंगे बाद में, and then we'll compile the results and share with you guys also what's happening. And maybe it can help you in developing your business models with more attributes, which will enable you to monetize it, you know. All right, so now I'm going to share the results. Okay. Will you please read them out? Do you have clarity about potential businesses that you can do? So out of 26 respondents, 61.5% are saying that they have clarity, and 38.5% are, saying that they don't have any clarity. Second question was that, have you developed any business plan on your business idea to cope up with the challenges for post-COVID-19 scenario? 38.5% have said that they have developed, whereby 61.5% have said scenario. Third question was, do you feel you need mentoring and professional support for ideation and implementation of your business idea? So out of 26 respondents, 92.3% are saying that they need mentoring, professional support for ideation Great. and implementation. Thank you, Sarah. Okay, now if you look at it, about 38 to 40% guys are ready with their business plans also, which means they have an idea and they have a business plan. But majority is looking for mentor, hand holding थोड़ी सी जरूरत है to help them through the thing. But the good thing is that they are cognizant that yes, we have to think of doing something different than conventional jobs, do some of your own business. Obviously, they have to prepare. आगे बड़े interesting polls हैं. So I hope the same guys can reply to them also, so we'll have a very clear picture on it. So moving on now to second round of questions with Hamad. Hamad, so now ये बातें भी सुन रही हैं. So how you see the new emerging opportunities in the area of entrepreneurship, and has it opened new growth areas? For example, अब ये pause हो गया, बहुत सारी चीजों को हमने देखा कि the most successful जिसने fund raise किया था वो भी facing problems है इस वक्त. ये left वाले जो हैं, तो in your views नए growth areas खुले हैं. Are there any new takeaways from जो भी काम कर रहे हैं and they will move on to something different? So I would like to have your thoughts and how you see importance of collaboration with multiple disciplines. This is very important. कि मैं अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे ना बेचना आता है, ना फाइनेंशियल मॉडल बनाना आता है, ना बिजनेस प्लान बनाना आता है, तो मुझे एक टीम चाहिए, डिफरेंट लोग चाहिए. एक मुझे प्रॉब्ली टेक्निकल टीम चाहिए, एक मार्केटिंग टीम चाहिए. अगर मैं रोबोट बनाना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, मुझे प्रॉब्ली मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए. तो उसकी कोलैबोरेशन की भी थोड़ी इंपॉर्टेंस पे आप बताओ, और ये बताओ व्हाट आर द न्यू ग्रोथ एरियाज व्हिच यू सी पोस्ट कोविड-19. थैंक यू. प्लीज हमारे. Okay. Thank you, Khalid Saab. First of all, Furqan, I salute your courage. Itna bada business fallen down, you're trying to mend it, and so I wish you all the best. And of course, there is always an opportunity in a certain situation, and I just pray that you are able to make. So yes, see the ends first. I'm glad that participants काफी बड़ी active participation, and there's a good way of evaluating
how they are taking this session. So first of all, आपको बड़ा simple तरीका है ये देखने का कि अब environment में हो क्या रहा है. सबसे पहली बड़ी अच्छी opportunity जो है ना, उसके लिए ये define करना जरूरी है कि startup क्या है और traditional business क्या है. One of the basic differences that a startup has from a traditional businesses is the option to scale. अगर आप एक traditional manufacturing concern है और आप let's suppose महीने के 1 लाख प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कल को आपको कोई 3 महीने बाद एक बंदा कहता है जी मुझे 10 लाख प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर आपको 10 लाख प्रोडक्ट का ऑर्डर आ भी जाए तो आपको बनाने के लिए बहुत सारा पैसा रिक्वायर है और बहुत टाइम रिक्वायर होगा. आप ओवरनाइट नहीं स्केल कर सकते. ऑन द अदर हैंड स्टार्टअप के साथ ये एक फर्क होता है कि आज मेरे 300 यूजर है मेरी ऐप. That's the beauty of a startup कि वो स्केल कर सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस स्केल नहीं कर सकता. और स्टार्टअप्स क्यों स्केल कर सकते हैं? Let's go into that. That's only because of the fact that they're online, they're internet. So there's internet involved, they're online. So basically digitization जो है वो इस blessing in disguise कोरोना की फॉर्म में ये हो रही है कि डिजिटाइजेशन हो रही है. हम यहाँ बैठे हुए हम मीटिंग कर रहे हैं, आप घर बैठे हुए आप ग्रोसरी कर रहे हैं, आप नहीं खुद बाहर जाना चाहते हैं, थ्रेट फील कर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट हो रही है. कंज्यूमर पैटर्न्स बदल जाएंगे सारे के सारे. सो अगर कल आपका इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ गई है, आपका कंटेंट कंजम्पशन बढ़ गई है, मोर टाइम. सो जहां डिजिटाइजेशन एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब है तमाम वो लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी होती जा रही है. ठीक है, एज यास्मीन सेड, लास्ट ईयर शी हैड टू गो टू ट्रैवल टू 10 countries to be able to be there. Now with this, her mind opening up to the idea of going online, visit any one of them, but she will be there in 50 countries, and I wish her the best for that. So the point is that digitalization will help you, all entrepreneurs who are working in the startup space, to grasp this opportunity. Internet penetration बढ़ेगी, लोगों के consumption patterns बढ़ेंगे, बदलेंगे, इन्वॉल्वमेंट होएगी, डिजिटल इकोनॉमी में बहुत सारा एक्सपेंशन आने वाली है. तो अब आपको देखना यह है कि आपने उस एरिया में किस फील्ड में खेलना है. अब आपका जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर बेसिक सवाल आपने कुछ 4 की. मेडिसिन और हेल्थ केयर में आप छोटे से पैटर्न्स देखें. अगर आजकल कोई बीमार हो भी जाता है, इंक्लूडिंग मी एंड माय सेल्फ, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, तो मैं डर रहा हूं अस्पताल जाते हुए किसी और बीमारी के लिए कि यार मैं जाऊं को और कोरोना के जम ना लग जाए. तो आपने अपनी सेहत का ख्याल वैसे रखना शुरू कर दिया. यार ज्यादा ठंडा ना खाओ, यार ये ना करो, जो बूढ़े हैं उनका ख्याल करो, अपनी बेसिक हेल्थ का ख्याल करना शुरू कर दिया. विच मीन्स के कंज्यूमर पैटर्न्स के अंदर जो आपकी चीजें हेल्थ से रिलेटेड है उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज योर फोकस इज मोर टुवर्ड्स हेल्थ केयर. So if you people are working towards on the fact कि जी prevention is better than cure, हमने अपनी हेल्थ केयर पे पैसे लगाने हैं, वो क्लीनिनेस होती है. अब आप देखें कितनी बाइंग हो रही है सोप्स की, डिटर्जेंट्स की, हैंड सैनिटाइजर्स की, मास्क की. सोचता नहीं था कोई इन मास्क को. ये मास्क सिर्फ फैक्ट्रीज में यूज होते थे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती थी. अब हर बंदा मास्क के बगैर नहीं है, जो नहीं होता उसको मिलने से कतराते हैं. ठीक है, सो ये सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपको हेल्प करेंगे. हेल्थ केयर इज गोना चेंज. लोगों ने की इंपॉर्टेंस का मतलब है कि वहां पे amount of money being spent in healthcare is going to increase. करना चाहेंगे, हेल्थ केयर कैन बी वन. फिर आपने एजुकेशन की बात की. एजुकेशन मैं आपको कहूँ, इट्स फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. हाई टाइम जहां आपने सारा कंटेंट को डिजिटाइज करना पड़ेगा ऑनलाइन ले जाने के लिए, इट्स हाई टाइम कि आप अपने करिकुलम को भी सीधा कर लें. ठीक है, no offense to any university, any institute, but we all of us are, including Khalid Saab, Yasmin, Furqan and myself, are the produce of these educational institutes. ठीक है, unfortunately सारी उंगलियां बराबर नहीं होती. उनको मौका मिलेगा कि वो डिजिटाइजेशन ऑफ कंटेंट के अंदर कुछ कंटेंट को अपग्रेड कर सके, which can elevate the level of students in terms of their understanding and exposure to be able to come up with greater ideas and do better in life. So एजुकेशन itself में बहुत पोटेंशियल आने वाला है. एक जमाने में एडटेक के स्टार्टअप्स हुआ ही नहीं करते थे. अब आपको बहुत सारा जब कंटेंट डिजिटाइज होगा तो आपको एडटेक में काफी एक्टिविटी नजर आएगी और उसमें स्मॉलर कंपनीज विल प्ले अ गुड पार्ट. दैट्स माय assumption towards that. फिर आपने बात की कोलैबोरेशन की. सो कोलैबोरेशन के अंदर as I said कि ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप में बड़ा फर्क है. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टू ऑल स्टूडेंट्स.
आपने अभी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना है. Yasmin and Furqan being entrepreneurs, they have a certain profile online available about what they do, who they are. That profile helps me, if I don't know them in person, it helps me evaluate them and make a perception of them in my head. कि यार ये किस लेवल का entrepreneur है. Shall I getting some mental benefit out of it? Is Furqan, if I want to do some sort of business with him, इसकी जो प्रोफाइल मुझे नजर आ रही है, I don't know him as in person, तो वो क्या ऐसी recognizable या ऐसी प्रोफाइल है कि I can depend on him. So आपकी जो अपनी ई प्रोफाइल है ना, उस पे काम करें. One of my mentor told me, हमाद, इंसान खुद कम जगहों पे जाता है, उसकी repute उससे बहुत आगे तक जाती है. And now your repute is only going to go through LinkedIn बनाए होते हैं, उस पे लटकी हुई तस्वीरें खींची होती हैं दरख्तों से. So change that. If you want to have serious business, make an accordingly profile. ठीक है? Put up, don't let negative comments come there. Be honest about it. Start making a profile जिसमें आप assume किए जाना चाहते हैं. That will help you, because आप लोगों को अभी आप फील्ड में एंटर होंगे, हम आपको नहीं जानते. Let's suppose you want to work with Yasmin. She doesn't know you. Will she want to work with you or not? So accordingly मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उन चीज़ों को इम्प्रोवाइज करें ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो सारी ऑनलाइन होनी है. उसको बेहतर करने के लिए आपको अपनी रिप्यूट पे, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जहां आपकी कोलैबोरेशंस की बात आएगी. And how do you see about collaboration with multiple disciplines? Furqan rightly pointed out. अब आपके पास टाइम बहुत कम होगा. You will see a lot of mergers. आपने बड़ी अच्छी बात की खालिद साहब. Raised a lot of money. They were looking into raising another round, and there they go. One fine day, एक तरफ steep expansion आ रही, zero. Revenues are completely zero, and they don't know for how long will this stay. Because हम किसी भी ऐसे बिजनेस में नहीं बैठ सकते, चाहे वो लाफ्टर थेरेपी का हो, चाहे वो बाइक शेयरिंग का हो, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हो. So buses is a big no. आपकी तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है. करीम एंड उबर, करीम ने अभी कोई 20-30% अपना एम्प्लॉयज ले. इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा. Some of the businesses are still doing well. Let me give you some examples. For example, आपने मुझसे पूछा कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरह इवॉल्व हो रही है. Furqan has a great live example in front of you. ठीक है? एक मेरा शेयर्ड इकोनॉमी का मॉडल था. He has converted into a delivery mechanism. लास्ट माइल के ऊपर ले गए. On the other hand, रेस्टोरेंट्स हैं. अभी दुबई में मैं पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग स्मार्ट किचन कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि रेस्टोरेंट्स विद लार्जर स्पेस, वो क्या कर रहे हैं कि वो छोटे रेस्टोरेंट्स space which will have all amenities to be able to cook and you deliver. उसका उन्होंने एक आउट स्टेशन रख दिया जिसके ऊपर आपकी कॉल्स आ रही हैं, ऑर्डर टेकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है. पीछे आपके बैठे हुए रेसिपीज आपकी और आपके किचन के लोग बैठे हुए हैं और आप वहां से डिलीवर कर पा रहे हैं. बिकॉज रेस्टोरेंट की सारी मॉडल चेंज हो गया. यू कांट सिट टुगेदर, यू कांट एंटरटेन. सो आपकी डाइनिंग आउट खत्म हो गई है, तो आपका टेक अवेज शुरू हो गए हैं. लोगों ने खर्च तो करना है. सो अगर आपने उसको टैप करना है तो स्मार्ट किचन्स आ गए हैं. Are there. My humble request to the students which will be entering the professional field, please read and have this habit of consuming good quality content. It will help you build a perspective. It will help you get exposed. And I'm sorry I took a lot of time. It was a very comprehensive question. Great. You're very relevant. You were very relevant, Hamad. I'm very happy that you touched on all of these points. कि business process outsourcing किस तरह हो रही है, किचन तक जो है वो BPO हो गया. तो which is excellent news. कि मेरी इनोवेशन में शेयर नहीं करूंगा, वो क्लोज इनोवेशन वाले लोग बच्चे हैं कि जी वो दूसरा चोरी कर लेगा. अच्छा, the best thing which you touch is now because of digitization scale up बड़ा आराम से आप कर सकते हो. I was talking to somebody few days back, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो यही बात हो रही थी कि how to launch it, how to monetize it, ये वो. And the thought was कि भाई इसको $1 में आप कर दो. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वर्चुअल हो गए हैं सारे. अगर 10-20 लाख लोगों ने भी उतार लिया तो you will and scale up उधर ही हो गया. तो डिजिटल प्रेजेंस, चाहे वो आपकी पर्सनल हो थ्रू लिंक्डइन प्रोफाइल,
बहुत जरूरी है, because that is where you will be telling the world, here I come, this is what I am, and this is what I'm doing, and you can come and take advantage by, you know, collaborating with me in any shape or form, buying my goods or services, or buying some equity into my company, or whatever way. I mean, thousands of ways will evolve, like we have just heard two very success stories here. So स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी इन्वेस्टर। वो ये देखना चाहते हैं यार ये बिजनेस जो है ना ये कितना ऊपर तक जा सकता है, इसकी कैपेसिटी टू ग्रो कितनी है, और सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टीम कितनी है। अकेला मैं खड़ा हो जाऊं जी मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे मैंने ये काम करना है, तो मैं एक जगह पे एज अ जज गया हुआ था, तो वहां पे एक जज ने पूछा उससे एक बच्चे से कि यार चल मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, व्हाट इफ यू डाई, फिर क्या होगा मेरे 2 करोड़ रुपए का। So this is how investors look at you, right? So very nice. Yasmin, so abhi we are seeing this world is full of anxiety and people are pretty uncertain about their careers and lives. So they want to get some good news also, right? They want to feel good from inside. तो अभी जो लोग थे पुरानी जनरेशन के, उनके लिए तो ये न्यू नॉर्मल होगा क्योंकि नई रियलिटीज में आ रहे हैं। लेकिन जो आजकल के जो बच्चे हैं, लेट्स से मिलेनियल्स या जनरेशन जी या inhabitants of this new normal, for them it will be soft landing, right? Yeah. They are also full of anxiety and things. So how you think your laughter therapy, in the first place, how you see those guys, and how do you think with laughter therapy and things like this and tools like this, you can really put a lot more confidence in them and take their anxiety out so that they can apply their minds and look for solutions, जैसे हमाद ने बताया और बाकी लोगों ने बताया भी, राठौर ने। So laughter therapy is a complementary exercise. ये ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जाना शुरू कर देते हैं तो आपको उसके फायदे नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप दिन में ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं तो आपको उसके फायदे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ग्रीन टी इटसेल्फ आपके सारे मसले खत्म नहीं कर देगी, लेकिन इट विल बी अ गुड एडिशन इनटू योर लाइफ। अच्छा, डे टू डे सिचुएशन में ये होता है कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, नई नई जॉब करना शुरू करते हैं, तो दिन में ऐसे कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे उनको थोड़ी थोड़ी खुश एंड कंबाइन होके आपका एक दिन अच्छा हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लास में गए, दोस्तों से मिले, इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन की नीड पूरी हो गई, कैंटीन पे गए, अच्छा खाना खाया, उससे जो है वो रिवॉर्ड उनको थोड़ा सा मिला, उससे वो थोड़ी सी खुशी हो गई। उसके बाद कोई स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी कर ली, देन किसी इवेंट के ऊपर चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए। सो दिन में छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे उनकी दिन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है उसकी नीड भी पूरी हो जाती है। एंड पूरा है कि वी आर केस्ड इन द हाउस, हमारे पार्क्स भी नहीं खुले हैं, हम लोग वॉक नहीं कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स भी नहीं खुले हुए, हम लोग लोगों से भी नहीं मिल सकते हैं, टीवी भी हम कितना देख लेंगे, नेटफ्लिक्स भी हम कितना देख लेंगे, रीडिंग करके भी कोई इतनी ज्यादा जो है वो खुशी नहीं होती। सो दिन में ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं जो स्टिमुलेशन हो जिससे दे फील हैप्पी, राइट? सो अब हमें ऐसी एक्टिविटीज ऐड करने की जरूरत है which make us happy in little ways, right? So laughter therapy actually works as that activity जो दिन में आपको थोड़ा सा हिला देती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे रोजाना की तकरीबन एक laughter therapy करानी होती है, and I try to do it in the beginning of the day so that सारा दिन जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं मैं उनको यूटिलाइज करती रहूं। लाफ्टर थेरेपी में ये होता है, इमेजिन कि आप 40 मिनट तक ऊंची ऊंची आवाज में हंस रहे हैं और आप साथ साथ डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, और स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो है वो जिनको आप नहीं जानते थे, लेकिन अब आप उनके साथ पागलों की तरह हंस रहे हैं। एंड इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग हमारे पास कम्युनिटी होती है, लाइक इवन व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, लोग चूंकि घर से कर रहे होते हैं तो अगर बाप बैठ के हंस रहे हैं तो बच्चे भी आ जाएंगे, वो भी साथ में खीखी करना शुरू हो जाएंगे। अक्सर दादा दादी बैठे हुए होते हैं, उनके साथ पोता पोती बैठे हुए होते हैं, दादा दादी पीछे बैठे हुए, पोता पोती जो है वो बेड के ऊपर छलांगे मार के हंस रहे हैं। लोग अक्सर ऐसे होते, दो तीन भाई होते हैं, तीनों ने स्क्रीन के ऊपर मुंह जोड़ा हुआ होता है और तीनों हंस रहे होते हैं, बहनें साथ में बैठी है, फैमिली साथ मिलके कर रही होती है। अक्सर ऐसा होता है लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में स्क्रीन रखी हुई होती है एंड कालीन पे बैठे हुए योगा के स्टाइल में वहां पे बैठ के हंस रहे हैं मियां बीवी। सो
imagine you do it at the beginning of the day or at any point of the day. जैसे उस दिन हमने जब मोरक्को में सेशन किया तो टाइम मैच करने के लिए हमारा रात को 2 बजे हुए थे, तो पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया तो उनका सहरी का टाइम के करीब था, राइट? सो उसमें ये था कि पूरी फैमिली जो है वो बैठी हुई है, एंड देन उधर से मोरक्को से भी लोग बैठे हुए हैं. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कम्युनिटी. हम जितने भी इंटरनेशनल सेशन करते हैं हम पाकिस्तानियों को जरूर उसमें एक देते हैं कि आप भी आके ज्वाइन करें, so that you get to have an exposure with them, like even if you can't travel, even if you can't go to conferences anymore, but go and interact with those people, right? So अच्छा, अब होता क्या है कि जब आजकल हम सोशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो हम किसी नए बंदे की शक्ल भी देख लें तो it sort of adds on to our day, right? It sort of makes us happy. So imagine laughing with new 30 people every single day, having access to that. It just generally uplifts your mood, right? So it's a very good addition into your routine. At the same time, I wouldn't say कि इससे जो है वो आपके दिन के मसले खत्म हो जाएंगे. You'll feel confident, you'll feel happy, but then it'll make you happy and it will have a long-lasting effect on your day and on your productivity. जब हम organizations के लिए इसको कर रहे हैं, जब हम दिन के शुरू में करते हैं, तो हाँ उसमें लोग कहते हैं कि अब चूंकि मैंने अपने दिन का स्टार्ट जो है वो हंस के किया है, और हमारी अक्सर एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिसमें आपको चेयर से उठना पड़ता है, and you're just moving slowly and laughing, you're flying like a bird and laughing, you're dancing and you're laughing. So उससे थोड़ी सी आपकी ना एक्सरसाइज भी हो जाती है, थोड़ा सा आप जरा you have out of body experience कि थोड़ा सा आप अपनी बॉडी में केस्ड फील कर रहे होते हैं. So a lot of people, especially tech companies, हमसे ज्यादातर बाय कर रही हैं laughter therapies, तो उनके एम्प्लॉयज ये हमें कहते हैं कि अब right after this I'm going to get on to calls and now I feel more chatty, I feel more smiley, I feel more funny, and I feel more confident about yourself, which is why I'm having repeat business with those organizations. And मैंने अपना जो है value model थोड़ा सा change किया है. Initially जब हम in person कराते थे तो थोड़े से हमारे limitations थे कि I can only be at a certain number of places, right? अब हमने ये किया कि if anybody buys a laughter therapy session from us, so now they're eligible to attend our monthly sessions for free for the next 3 months, right? Now because it doesn't affect me, like मेरे एक session में 100 लोग बैठे हुए हो, 200 लोग बैठे हुए हो, 500 लोग बैठे हुए हो, I can accommodate all of them through Zoom, right? So it's making things more and more possible for me now. अच्छा, very good, Yasmin. अच्छा, I was in one of the sessions जहाँ पे ये बात हो रही थी stress related to COVID और ये वो, तो मैं अपनी take उस पे ये है कि stress is always good for progress. जब तक कोई fear नहीं आएगा, कोई stressor नहीं आएगा, आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, गहराई में नहीं जाओगे, थोड़े परेशान नहीं होगे. आइंस्टाइन ने भी कहा था, या जितने भी बड़े लोग थे कि genius is nothing. It's 99% perspiration and 1% inspiration. तो stressors और ये सब चीजें भी अच्छी हैं. They help you drive in certain direction. They motivate you to achieve something. और उसके साथ अगर आप life में थोड़ी happiness, smile और exercise ले आते हो, like laughter therapy and the things which you are doing, तो ये आपको थोड़ा detox भी कर देती है from your pent up emotions and फजूल चीजें जो ज़हन में चल रही होती हैं. So fear is gone now. You are working with fresh mind, and you think you can produce more and better. So on the other hand, despite of all the myths going on about COVID and the anxiety and stress it has created, I'm of the opinion that inshallah it will drive humanity into new realm. Yes. जो chemistry में होते हैं ना, cell KLMN, अभी हम KLM पे ही फंसे हुए थे, OPQ, will be फिर एक everybody is confused in his life. The difference is the level of confusion. एक जो छोटा बंदा है वो छोटे level पे confused है. Einstein जो था वो किसी और level पे confused था. So he was trying to solve different global problems. तो confusion तो सबके mind में है. आपका capability level क्या है? आपका capability bank क्या है? आपकी knowledge कितनी है? ऐसे हमारा क्या था कि अच्छा content पढ़ो, देखो लोग क्या कर रहे हैं, and then read it with a happy mood and a good healthy mind. And think of coming out with solutions. जिस तरह फुरकान ने जबरदस्त तरीके से, he re-emerged the phoenix and mashallah is back on the track. So excellent. I think. Yeah, I just like to add one more point. Please. I just like to suggest to students जैसे हम बात कहते हैं कि अच्छा content पढ़ें, अपनी profile के ऊपर काम करें. I think profile के ऊपर काम करना तो it's absolutely important. I always tell people just look your product. If you go to my Facebook page, you'll see every single picture as
I'm always laughing because, you know, if people need to buy my laughter therapy, they need to believe that I laugh all the time or not. So I have a small suggestion for you, जो कि मैं अपने starter में भी उसको include कर रही हूँ. वो ये कि अभी अक्सर लोग जो है वो online courses की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कि जी हम ये online courses attend कर लें, हम ये नई चीज़ सीख लें. I would say कि existing talent को भी इस तरह से इस्तेमाल करें. A lot of startups like myself, they can use virtual teams now. And we're very open to having new lot as interns or as in our business development. Like हम अपनी team बढ़ाने में इस time interested हैं. For example, now what I've started doing is कि COVID actually allowed me to make a virtual team internationally. So मैंने Morocco से एक बंदी है, उसको अब laughter therapy train कर रही हूँ. Then I have a person from Africa, one from Singapore, one from London. So I've been able to make a virtual team. वो लोग मेरे लिए वहाँ से business development कर रहे हैं. So I would be very interested कि अगर for example students from UMT they apply for a virtual internship, so they will get to learn how a startup operates, and especially during COVID, I think this will add a lot of value to their CV as well. कि during COVID भी हम internship कर रहे थे, we got to learn something new, right? And it gives me a chance to A, mentor them, and B, utilize extra help or extra workforce. Right? We'll take so your help, Yasmin. We'll take your help, Sure. inshallah. We'll have a separate session on that. Because Sure, in the interest of the time, I want to move forward. So Furqan, Sure. now I'll come to you now. You have seen the rise and the fall of an empire, and then you saw the empire going up again. So आपने पूरा cycle देख लिया है business का. Now, how do you see in your own personal thoughts, एक intuition इंसान का develop होता है, how you would be ensuring that you capitalize on your and not to lose it again, क्योंकि अभी तो आप बड़े केयरफुल हो गए ना कि यार ये लूज ना हो जाए फिर क्या होगा. तो व्हाट आर आपकी थॉट क्या डेवलप हुई है उसके ऊपर? आई लाइक टू अंडरस्टैंड दैट. First of all, I would say that, you know, before I never thought that, you know, something can go wrong. You know, I'm always the person who is, you know, fail fast forward. That was my belief. And this gave me a sense of, you know, that there could be things can go wrong. And I did prepare myself for something, if something can go wrong, but I never knew that it could go that bad. And I think nobody in the world imagined that it could go that bad. So, well, this is something that was not in my control. You know, there was nothing that I made personally as my self mistake or something my team made mistake. Something that happened that was out of our controls. But what I did learn that, you know, we have to move on. You know, I took it very personally, and it destroyed my health, let me went to the pain and all these things. And then I went out of this, all the hospital and operations things. And I thought to myself, you know, I had a direct call with the God at some point. You know, my BP was going 170 and then 180, beep, 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 and the screen's going. And I said, at that stage, I forget I was a businessman or I'm a husband, or I have a father and mother. Everything was gone in my mind. The only thing I had in my mind was that, you know, whatever after is going to be, I'm going to take it and praise it. And that helped me out of, you know, fast getting out from the hospital, because, you know, I was the guy who was visioning, I think, very high. And with all these things, I realized that, you know, what I really need is just enough, you know, to do enough things that could create a good for the environment, good for the people, and good for myself. And this is, I would say that as, you know, we have a very great panel, Hamad and Yasmin. First of all, you know, I would say that people should take a therapy. There is nothing wrong to that. Because, you know, there is some point that we take all these things inside and we have nobody to talk with. As, you know, our culture teaches the man is the bold and you have to be strong and all these things. Sometimes you do break down. And, you know, I did mistake. I should have, you know, find some therapist and, you know, have gone to it and cried. And I should have cried louder. I should have get it out, everything I was thinking. And I didn't do it. I was keep taking it inside and inside in the bubble. And the bubble went, had its stage.
So from this intake, you know, no matter what we're going to survive, and what we need is the basic things. So, you know, as entrepreneur, as startup, I've been doing business successfully businesses for, you know, since I left when I was 18, I left Pakistan. I moved to Philippines, delivering the university last after Orient. So from this is what I would say. First thing, try what you can, and if you fail, it's fine. You know, we should not, It's you know, part of the equation. Failing is also good. it's It teaches partial. you. Yeah, it's another ladder to success. Excellent. Exactly. Um, Furkan, and I would like to run. I pause in Acharo. Sarah, can you please run the second poll? And we have 1 minute. Quickly, 3 questions, and let's see how the trend is shaping up after listening to Yasmin, Furkan, and Ahmad Yes, and their thoughts. yes, sir, I'm running. Man has always emerged out of. जब स्पेनिश फ्लू आया था ना उस वक्त तो ना डेटा साइंस था ना टेक्नोलॉजी थी ना वैक्सीन थी कुछ भी नहीं था and we managed to survive okay at a higher cost but human being there from शुभ कहाँ से कहाँ चले गए and when I think the world went out of equilibrium for some time so reset का बटन दबते ही है I received a very interesting message के the weight of this coronavirus is negative something atoms. Okay, great. So the total grammage which has landed on Earth or created or whatever is just 1 gram. And it is around the world. You know, 1 gram of coronavirus has really made us, reinvent our lives. So, अच्छा है आई थिंक बड़े अच्छे टाइम पे ये चैलेंज आया है और इससे इंशाल्लाह जब हम इवॉल्व करके निकलेंगे तो हम जेट स्पीड पे आगे जा रहे होंगे and of course the lifestyle will change, the patterns will change, the behavior will change. While this survey poll is going on, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था कि एलॉन मस्क ने कहा मैं लूप डाल दूंगा जिसपे आप न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस 15 मिनट में पहुंच जाओगे आप मैग्नेटिकली उसमें आगे वैक्यूम होगा एंड इट विल मूव एट द स्पीड ऑफ व्हाटएवर एंड न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस 4 different time zones and you'll do it in 15 minutes. Coffee आप पी रहे होगे and you're in Los Angeles. अच्छा उसके लिए G force है ये तो उन्होंने कहा कि उसके लिए we'll start working on health regime for the people. People have to stay healthy ताकि उस speed को बर्दाश्त कर सके उस G force को कर सके while they are doing other things to minimize the impact. लेकिन at the same time they were working on कि इनकी health कैसे improve की जाए. तो अब let's see what happens to that loop और कई मुल्कों ने loop के ऊपर काम किया. And it's going on and I think that will be another revolution और connectivity की लेकिन अब हम देख रहे हैं कि virtual हो गई है digital हो गई हुई है वो तो 15 मिनट में इसलिए पहुंचना जरूरी था कि वहां मिलना था मीटिंग करके वापस आना था सेल्स टीम में मिलने जाना था अब तो everything is getting digital so that investment probably they will be revisiting their business models and pivoting away from the original thoughts. So Sarah, are we ready? Sarah, can you hear me? Your mic is off, Sarah. Yeah, I will share the results once I get a reasonable number on that server. अच्छा वो भी it doesn't matter हमने एक sample size ही लेना है बाकी वो Facebook से जब आपको डेटा आ जाएगा तो then you'll have bigger numbers अभी तो हम quickly 25 20 30 जितने भी लोग कर रहे हैं it is telling us because we have a nice breakup from different domains. This online poll help us in what is happening in the minds of the participants because we cannot answer all the questions and so we have to preempt that thought and एक तरफ drive करने उनके mindset को कि it's all about mindset, it's all about thinking out of the box, it's all about okay I'm stuck here, what's the way forward, how to find मेहनत करनी पड़ती है all you need to do is put in extra hours probably. I will add something if you allow me please. A moment. Yes. One more thing is that now with this emerging thing, there will be no this, I should have this rank or I should find this job or I should do this.
You have to do what is there, what the problem is there. So, you know, there will be no longer this mindset thing that, you know, I have to be now with this title job or this place, what is there, and look at the opportunity and help to solve the problem. Um, Another thing that in Pakistan we have the largest youth, you know, the most young people in the country, and I think that can be really capitalized. Again, do not wait for to build a huge infrastructure. You can do a lot of things with Facebook, whatever you have. Even, you know, setting up a small call center can do a lot of things. The basic things, you can go back to basic things which can help you to, you know, get some revenue. And once you have something, a small business model that could scale up over the period of time. We started with the grocery service by ourselves. Today we are being approached with the largest supermarkets. They wants to work with us. And then we got approached with the hotels who wants to have their food delivery. So we did ourselves with the level we could, and we continue our service, and then the good things came to us. So you have to start somewhere, and you have to persistent what you do. And again, as Ahmed mentioned, that, you know, you have to have your online profile. So for me today is my profile and my business profile are two together. I have to boost my business profile every time. Every time we have a good review, if you go to Book to Wheel Facebook page, we share our recommendation and reviews, so people know that this business is credible. There are people leaving review. So credibility is the most important thing for today to survive in this electronic digitalization environment. Great, great. So I think we are having some problem with collection of data. लेकिन सारा what जितने भी questionnaires आ गए ना उनको आप run कर दो. वो collection में I think there's some problem. I think कोई 9-10 तो आ गए हैं which I can see here. बाहर वही run कर दो because we want to see the trend line, not the actual number. वो तो बाद में हो जाएगा. Excellent, Furqan. You have mashallah evolved your business model. All right. So the first question was, do you feel that you need to start working on new business idea during your academic journey? 81.8% have agreed to this statement. Do you think that your final year projects should be based on your business idea that can be implemented after your graduation to convert your project into a commercial product? 90.9% have agreed to this statement. Are you willing to invest time in learning new skills and gaining new knowledge to support your business idea? 100% have agreed to this thing. Excellent, excellent. So the results have. This is what we wanted to find out. And guys, kindly participate in these polls. थोड़ा सा हमारा problem आएगा शायद forms खुलने में. वो कभी-कभी हो जाता है. Normally तो नहीं होता. So please try to participate because this is what will drive your future and everybody's future. अब आप देखो, everybody is willing to go for upskilling their skills, getting to new knowledge, और अपनी academic journey को entrepreneurial journey में convert करने को तैयार हैं कि हमारा जो final year project है वो product में convert हो जाए. इसको हम कहते हैं Tech 2.0. इसके ऊपर हमने काफी sessions UMT में हमने किए हैं, and we have seen a lot of success stories, especially in software area. बाकी भी robotics में भी कुछ चीजें हैं. So we'll discuss it later. So mashallah, I think trend line is evolving and people are willing to take that into consideration. So moving on to the third round, because I think we have to respect time also, क्योंकि the participants मुझे कह रहे हैं कि उनकी कोई और भी appointments हैं और basically वो आखिरी इशरा शुरू हो गया. तो Hamad, how can we respond, recover and eventually thrive? What now is the time to make a game plan, not just to survive, but to grow also. We need to have a game plan. अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं, काफी बातें कवर हो गई हैं. इसमें कोई आपकी स्पेसिफिक थॉट है ना, तो वो आप मुझे दे दें. यास्मीन, आप भी मुझे इसी पॉइंट पे कोई अपनी थॉट लाइन दे दें, और फुरकान आप भी इसी लाइन पे अपनी कोई थॉट दे दें कि अभी क्या नया गेम प्लान, हाउ टू इवॉल्व, हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, फिर हम थर्ड पोल रन कर देंगे. It's open to your thoughts. I like to have whatever deep seated in your hearts. Say what you have never been able to do in the world before. Timing is very important. So decisions to be taken, timing has a key role in it.
Secondly, I would say कि आपने देखा है, how you respond. Just do not react to the situation. Respond to the situation. And response or reaction में फर्क ये होता है कि you understand the situation first, you analyze it, and then you respond. Reaction is something which is, you know, on top of it. You just कि अच्छा ये हो गया, तुम फौरन ये कर लेते हैं. You need to think of the fact कि अगर हम ये करेंगे तो उससे क्या repercussions आएंगी. I think it's just being by more aware of the surrounding. एक की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटरप्रेन्योर, हमारे साथ 2 एंटरप्रेन्योर बैठे हैं माशाल्लाह, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बैठे हैं. एक की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटरप्रेन्योर यहाँ इस सारी सिचुएशन के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है ना, वो होता है डोमेन नॉलेज, कि वो अपनी डोमेन को बहुत अच्छी तरह समझता है जिसमें वो ऑपरेट करता है. सो अगर आपको किसी चीज में ऑपरेट करना है, किसी खास चीज में बिजनेस करना है, फॉर इंस्टेंस कोविड के सिनेरियो के अंदर ऑपरेट करना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कोविड की रिपरकशंस एज इन डिटेल एज यू कैन. You need to be on top of the game कि कब इसकी कोई इलाज आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या मामला रहेगा, कितनी देर जा रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, आने वाले वक्तों में क्या चीजें ज्यादा किस तरफ जाएंगी. All of this you can comprehend just by evaluating the current scenario and being well aware of the situation around. More aware of the surrounding and get to have the domain knowledge, and in this case have the knowledge of COVID, what's happening around COVID पे क्या development हो रही है. And कुछ countries हमसे curve में काफी आगे हैं. You their trends and simply learn. You don't have to repeat the same mistakes as they have. Learn by them and act accordingly. Thank you. So you don't need to reinvent the wheel or anything. Just see what they are doing and learn from them. It's a quick solution to the problem, and move on. और अपनी academic journey के ऊपर जरा focus कर लें. And while you're going through your academic journey, see COVID का या something like COVID can happen again or tomorrow. God knows what's going to happen tomorrow. So we should be well prepared now. Yasmin, your thoughts? Yasmin का mic hold there, please. I think it's off. Yasmin? Has to do it. Yeah, now Okay. it's unmuted. Acha. So I think I would suggest to go hyper local. अभी क्या हो रहा है, I was having this discussion with my brothers as well, and हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब बहुत सारी countries जो हैं वो interdependent के बजाय independent हो जाएंगी. Like for example, a lot of things that we used to import from other countries, we would like to make it ourselves, because pandemic के दौरान हमने सबसे ज़्यादा ये चीज़ notice की है कि एक country से दूसरी country में जब आएंगे वो बिल्कुल खत्म हो गई. Even एक country से दूसरी country का, even एक city से दूसरी city भी हमने let's suppose grocery भी करनी है तो हम सबसे अपने करीबी area से grocery करेंगे इस time पे, या हम अपने trusted लोगों से, हमने टेलर के पास भी जाने, whoever we are going to be in business with, we're only going to build our decision upon trust, right? Or what is nearby, what is locally present. So I would suggest all the students to go hyper local if they want to start a business idea. कोई छोटी सी product बनाए, it could be anything. Like literally it could be even a food startup, right? कि आप घर पे brownies बना रहे हैं और आप बेच रहे हैं, तो you should only focus on आपके जो करीब एरिया, लाइक आपका जो करीब का इन्फ्लुएंसिंग peer group है, like it could be on your Facebook, it could be on your LinkedIn, it could be on your Instagram, it could be in your neighbors, it could be in your area. जो आपके करीब लोग हैं, try to be hyper local in selling, because those are the people who trust you, right? Like for example, in my case, the first few people who bought laughter therapy from me were the people who had already done business with me in the past, जो कि already मेरे clients थे, they trusted me, right? And then उसके बाद it starts expanding. So उस टाइम ये ना सोचे कि हमने international कैसे जाने, हमने पूरे पाकिस्तान को कैसे बेचना, हमने पूरे लाहौर को कैसे बेचना. Start very, very local. Start by selling it to your friends, because entrepreneurship is mostly about selling, and then some about the product as well. Because for example, I remember 2.5 years ago when I started telling people that I'm going to start laughter, they were like, seriously, you're going to make money out of it? Like, is it an actually business idea? Like how far can you go with it? And then I ended up working with some of the most renowned companies in the entire world, right? But I started it literally with hyper local. कि अपने lawn में एक laughter therapy रख दी, put up a price tag on it, and people showed up and kept doing it. And then I went to local organizations, and then I kept going bigger and bigger, and then size increase hona shuru hua. So wherever you are, try to focus on that market. Try to enhance your skills of selling. अपना जो बेचने वाला skill है उसको बहुत ज़्यादा strong करें. आप
कुछ भी बेचेंगे eventually वो बिकना शुरू हो जाएगा if you know how to sell. So stay hyper local right now. Great. So basically, selling in the age of digitalization is digital, improving your digital footprint. Your personal brand management is very important on the digital platforms. Yes. Add to your skills, tell the people who you are, because you have to sell yourself first before you can sell anything else probably. And integrity has to be an integral part of whatever you say or do. And whatever you commit, you deliver, so that you have proper rating, and then you can scale it up through more people. Excellent, Yasmin. Furqan, your final talks and thoughts. After this, we'll run the third questionnaire, and then we'll have a concluding session. I would say that collaborate, partnership, and explore your domain and the people you have. Again, this is not the time to invest on building something very big. You don't know it will last or not. Maybe things go back very normal and things might not get back normal. So this is not the time. If you have an idea, you should put it out there, which can help other people, and find as many people you can who can help you, because you yourself cannot do anything. So let other people help you, and have 1% of the pie than having nothing is better than something. That's my last advice for everybody. Sarah, please run the poll. Excellent. So it's a there's no point in getting the drawing board and to start working from the scratch. Just see whatever you want to do. Become we call it developers model actually. Become a developer and a promoter. Buy technology from wherever it is available. Hook it onto your technology, or maybe you can use that and you become a marketeer. तो किसी की भी आप चीज लेके आगे बेच सकते हो, उसमें अपने साथ collaborate भी कर सकते हो, independently भी कर सकते हो, and you can feed your services to that technology provider also. So you have to keep on evolving your business models, keep on thinking. Excellent, Furqan. And mashallah, you have gone all the way from A to Z and Z to A, and then back to normal, which is very, very encouraging, honestly, and students should learn from it. ये हम सारा recording जो है we'll be sharing with the students later on also, because the classes are अभी चल रही हैं. And I think there's a serious takeaway from this session. So Sarah, once you are ready, just let me know for the results. और से अगर respondents को अगर problem आ रही है, number कम भी है, doesn't matter. Just and Hamad has raised his hand. So can you please open the mic of Hamad? थैंक यू सर. मैं सिर्फ दो बातें ऐड करना चाहूंगा. फुरकान की बातों से मुझे दो बातें याद आई जो मैं बड़ी आई वुड लाइक टू जस्ट रीआइटरेट. एक तो फुरकान से शेयर करूंगा. मेरे एक कोच हैं, उन्होंने मुझे पिछले दिनों एक बड़ी सी बात की कि जब नेगेटिव इमोशंस, सैडनेस, एंगर आपको हिट करते हैं एंड एज अ रिस्पांस टू अ सर्टेन सिचुएशन, तो जनरली कोशिश करनी चाहिए कि वो सब नहीं निकाल देने चाहिए रोने से या किसी भी तरह से. एंड यास्मीन माइट बी डिफरिंग टू माय व्यूज हियर, बट मुझे बात लॉजिकल लगी तो मैंने कहा फुरकान से कहूं. उन्होंने कहा वो सब ना निकाल दो, क्योंकि वही नेगेटिव इमोशंस विल हेल्प यू टेक right decisions in the time to come. And as Khalid sahab also pointed out, you'll be more careful towards a few things in the future. So my best wishes, and I just wanted to share कि अगर आप पूरे emotions नहीं निकाल सके, don't worry, they will help you in your journey ahead. And one more thing sir, जो मुझे फुरकान की बात सुनते हुए टाइम के हवाले से बात याद आई सर, वो ये थी कि एज एन एंटरप्रेन्योर हर इंडिविजुअल का, चाहे वो नौकरी पेशा हो या एंटरप्रेन्योर हो, उसके पास इन्वेस्टमेंट हमेशा लिमिटेड होती है, टाइम की हो या रिसोर्सेज की हो. सो माय टेक इज कि आप वो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें. और मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ. को पिछले दिनों में एक बिजनेस साथ बैठे हुए थे जो कि एक डिलीवरी बिजनेस बन रहा है ग्रोसरी का. तो उसके ऊपर डिस्कशन ये हो रही थी कि पैसा है, इन्वेस्टर भी बैठा हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट किस तरफ करनी है, कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर करनी है या हमने अपना फ्लीट खड़ा करना है, क्योंकि हमें अपना पर्सनल फ्लीट भी चाहिए आने वाले वक्तों में. सो हमने इसका फैसला इन बातों पे किया कि यार अगर तो कस्टमर ऐसा एक्वायर होता है जो कि जिसकी बिजनेस की अपनी स्टिकीनेस है और कल को इतने आराम से नहीं चला जाएगा, तो प्रॉब्ली हैविंग अ लार्जर कस्टमर बेस इज मोर इन्वेस्टेबल देन हैविंग अ फ्लीट ऑफ कार्स और समथिंग एल्स. बट इन द फ्यूचर वी सी के कस्टमर फ्लक्चुएट भी, फॉरेन से स्विच भी कर जाएगा
और मेरी अगर मैं फ्लीट अपना खड़ा कर लेता हूँ तो आने वाले वक्तों में गाड़ियों की प्राइसेस ऊपर जानी है या ऐसा वैसा होना है, तो प्रॉब्ली इन्वेस्टिंग इन फ्लीट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो प्लीज आपको अपने पूरी सप्लाई बिजनेस की सप्लाई चेन में ये देखना होता है कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मैंने उनको फोकस कहाँ करना है, वो कौन सा एलिमेंट ऑफ बिजनेस है जिसको मैं कल को कहीं और भी लेके जा. अगर मेरे कस्टमर्स बेस रहेगी तो मैं उस बेस के साथ, जिस तरह फुरकान ने हैव प्लेड अदरवाइज, राइट? So probably you need to think about the fact कि वो कौन सा business element है जिसके ऊपर मेरी investment is more crucial. So that's it. Excellent. Actually, this is business model optimization with risk mitigation strategy. And I think आप जैसे लोगों के साथ बैठ के students को बात करनी चाहिए, और जब अपने ideas share करेंगे, you can open up their minds also, and then they can come to something which is credible, solid, and which can move forward, और जिसको वो sustainable lines पे चला सकते हैं. So I think yeah, excellent thoughts. Sarah, are we ready with the results? Please. अच्छा, नेगेटिव इमोशंस भी आपको पुश करते हैं, इनसिक्योरिटी आपको बड़ा पुश करती है काम करने के लिए, लेकिन लाफ्टर थेरेपी भी एक सेइंग है दुनिया में, और बड़े कामयाब लोग ये कहते हैं कि पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्व्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स. तो अगर इफ यू हैव अ गुड फीलिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू हैव कन्विक्शन, यू आर फीलिंग लाइट एंड इजी, तो आप कोई भी काम करोगे पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ करोगे, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज के साथ करोगे. Lenji, we have the, okay, please explain. All right, so first question was, do you think you need to collaborate with people of different domains for the design and development of your product through multidisciplinary collaboration? So 88.2% have agreed to this statement. Excellent. Do you think you need to make a strong bonded team which will fight the odds for marketing, promotion, and monetization of your product? 100% have agreed to that statement. Do you think in the emerging landscape, awareness of technology is important to market your talent? And 100% have agreed to this. Excellent. So, जो भी आप लोगों ने suggestions दी हैं, I think people have bought it, and results आपके सामने हैं कि they are agreeing on using of technology for promoting their cause. Collaboration पे बच्चे जाते नहीं थे कि मेरा idea close innovation के ऊपर जाते थे. Now they are willing to learn more. जो हमारा poll का 9 questions का जो trend line आई है, उसमें they are very conscious of the fact that they have to be more proactive. They have to come up with new solutions during their academic journey. They need to collaborate to look at the to see. आप लोगों ने कुछ अगर कहना है तो हम online each please. तो माइक खोल दें तीनों के मारिए and let them talk one line whatever they want to say, starting from Hamad. Thank you so much for hosting me, and it was a great honor to share the panel with two entrepreneurs and share experiences with you. And I'm glad the way you are monitoring the progress of the session in terms of the feedback. So thank you. And you think the trend line which is emerging is as per the new normal which is coming up? It feels so as of now. Okay, great. Yasmin, your take? Well, yeah, so I'm glad to be here, specifically for the reason that I'm also a UMT graduate. My second master was from UMT. And I want to tell the students that there was a time when I was at your end, although aaj se bahut purani baat hai, but phir bhi when I was in the students, and the fact that you're here listening to the talk, even if that would not produce huge amount of results, that means that your life is going to change if you keep doing that. So if you keep becoming part of the conversation, even online, digitally, in person, keep learning about what's happening, kaise cheezein change ho rahi hain, it's going to take you somewhere. So yeah, keep doing Yasmin, it. Thank you. Furqan, your last thoughts? Yes, my last thoughts are I am available for anybody who need help. I did my last 2 lectures at UMT, and I took some of the students who are actually now my business partners. If you are, positive, if you are willing to, go extra mile,
I'm an investor as well myself. I now invest in other people, and you know, you can also sign up with me in my different ventures, what I'm doing. And I like to offer free help to the startups who are very potential, that could be supervised from the UMT, you know, and I could provide my assistance to those. So you have my LinkedIn, say my name, search it there. Reach me out, and please, if you need any help, feel free to write me. So great, it's a freebie and a gift. That's the best gift which I could think of. Furkan has given to the students of UMT. Kindly avail this opportunity. He's sitting in Denmark, he's doing business Philippines and other places, and he's still very warm, hot and hungry for new ventures. So please take full advantage of it. So thank you very much, Hamad Saab, Furkan and Yasmin. And it was a great learning session for me also. इन समरी अगर मैं वन लाइन में कहूँ तो मुझे बात ये समझ में आई है, हम सब न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा. तो कैंडिडेटली स्पीकिंग फ्रॉम ऑल द टॉक्स बात समझ में आई है कि वर्चुअल इज द न्यू नॉर्मल एंड वी हैव टू नाउ स्टार्ट गियरिंग अप टुवर्ड्स वर्चुअल रियलिटी. Reality is getting virtual now, so we need to gear up in that area through whatever domain we are in. We should see how it can be used and developed and promoted or monetized virtually, for which Hamad Saab is available in incubator. Furkan Rathod Saab has offered, he has made a very generous offer. Yasmin Butt has also made a very generous offer. So thank you very much all the panelists for your time, and thank you very much. Good luck. Take care. Bye.